দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হোৱা গোপন বুজাবুজিৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই বিষয়ে মুখ খুলিছে স্বয়ং দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্ৰ যাদৱে। আজি আমি ফাদিল কৰিম কেনেকৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ কান্ধত বন্ধুক থৈ নিৰ্বাচন খেলিছিল আৰু কেনেকৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বি টিম হৈ আম আদমি পাৰ্টিক পৰাস্ত কৰিবলৈ কি কি খেল খেলিছিল। প্ৰথমে শুনক কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ অধ্যক্ষৰ স্বীকাৰোক্তি। सोचा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो जरूरी है कि केजरीवाल जी को हराया जाए, जरूरी है मनीष सिसोदिया को हराया जाए, जरूरी है सत्येंद्र गर्ग को हराया जाए। जो इनके बड़े चेहरे थे कम से कम उनको अगर हम घेर लेते हैं तो शायद हमारा रास्ता आसान हो और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हो, परसेप्शन भी बना और इन लोगों को हम हराने में भी कामयाब हो पाए। गम पालेने दिल्लीर निर्वाचনত জয়ী হোৱাটো কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেটেই নাছিল। কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেটত আছিল বিজেপিৰ লগ হৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ ভোট বিভাজন ঘটাই আপৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক পৰাস্ত কৰা আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ চিইচিৰ মিটিঙত। স্বয়ং ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰগেই ৰচিছিল এই ষড়যন্ত্ৰ। तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है भले ही बीजेपी जीत जाए। तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है भले ही बीजेपी जीत जाए। फाइनली जब हम सीईसी की मीटिंग में बैठे थे तब ये बात हमने तय की, तब हमने हमारे में से कुछ लोगों ने ये चर्चा भी की। उस समय ये क्लियर तय हुआ कि भाई वी नीड टू गो ऑल आउट and that is when Khadge ji took an initiative, Rahul ji took an initiative and he said कि नहीं बिल्कुल ठीक है। যাৰ বিষয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ আগতেই সকলো ইংগিত দিছিল। ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। এফালে কংগ্ৰেছে সেটিং কৰিছিল আৰু আনফালে বিজেপিয়ে দিল্লীৰ নিৰ্বাচন আয়োগক হাত কৰি ভোট চুৰিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। चुनाव कराने का जरूरत ही क्या, चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम। আৰু ঠিক সেইদৰেই চলে বলে কৌশলেৰে বিজেপিয়ে দিল্লীৰ নিৰ্বাচন চুৰি কৰে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বি টিম ৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈ সমস্ত শক্তিৰে বিজেপিৰ লগ দিলে। কংগ্ৰেছৰ এই বদন্যতাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে বিজেপিয়ে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ দৰে বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ নামত এতিয়াও কোনো কংগ্ৰেছৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। ই পৰিষ্কাৰ কৰে যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ গোপন মিতিৰালি আছে, কিন্তু জনতাক দেখুৱাই এখন বেলেগ ছবি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নিউজ লাইভ।